दर्शकबिन तपाईँले अब हेर्नु भएको छ कि सरले जुन कविता गर्नुभएको छ र जुन हाम्रो कविता भनेको यसलाई मिथिलाको खानपान र मिथिलाको संस्कृतिलाई जोड्ने एउटा यो कविता हो। त्यसपछि सरले अर्को पनि कविता लेख्नु भएको छ र खास गरेर यो मेरो अनुरोधमा नै यो कविताहरू सरलाई लेख्नु भएको छ। जब म काठमाडौँमा हुँदा सरलाई सुन्दा उहाँबाट नै मैले अनुरोध गरेर सर एकचोटि खानपानमा पनि कविता लेख्नु, संस्कृतिहरूमा त धेरै लेख्नु भयो, अझ जुन मिथिलाको खानपान छ त्यसमा पनि लेख्नु भनेर सरलाई भन्दा अब धेरै खुसी लाग्यो। आज जुन हामीले लाइभ सुनिरहेछौँ यसलाई त्यसको लागि पनि म सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामी अर्को कवितातर्फ जानेछौँ। हजुर सर अब स्टार्ट गर्नु। धन्यवाद हाम्रो मास्टर सेफ महेश साज्यू, तपाईँले मलाई एउटा अझ कविता, त्योभन्दा पहिला म एक लाइन मेरो मनमा जिज्ञासा हो, त्यो जिज्ञासा मलाई समेट दिँदा हुन्थ्यो। धेरै छन् जिज्ञासा तपाईँसँग, त मलाई लाग्छ 2-4 घन्टा 5 घन्टा हामीले चर्चा गर्दा मैले धेरै कुरोको अनुभव, किनभने हाम्रो मधेसमा या मिथिलामा तराईमा खानपान भनेको मान्छेले खानपान मात्रै बुझ्यो, तर आज तपाईँले के हामीलाई भन्नुभयो, होइन हरेक खानपानसँग त्यसको भिटामिन प्रोटिन सबै जोडिया हो, मतलब स्वास्थ्यसँग जोड्नु भए हो। यति कहाँ जानकारी छन्, कहाँ हाम्रा मिथिलाका महिला होस् या पुरुष, त्यो कुरो पनि आज तपाईँले जानकारी गराउनु हो। मलाई लाग्छ हामीले प्रत्येक आइटममा तपाईँसँग कुरो गऱ्यो भने तपाईँले प्रत्येक आइटमको भन्न सक्नुहुन्छ कुलमा के छन् र स्वास्थ्यवर्धक किन हो, तर हामीसँग टाइम पनि अभाव हो। तर मलाई एउटा आज के जिज्ञासा छ भने तपाईँले जुन अहिले मिथिला खानपानको जुन आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई बढाइराख्नु भएको छ, यो नेपालभरिमा कहाँसम्म तपाईँ पुग्नु भएको छ? हिमाल पहाड तराईमा तपाईँको लक्ष्य आजसम्मको डेटमा कति ठाउँमा पुग्नु भएको हो? यो मेरो भित्रको आत्माको मनको प्रश्न हो। कृपया पहिला यो प्रश्नको मलाई हल गरिदिनु, अनि त्यसपछि म कविता पक्कै वाचन गर्छु। धन्यवाद। सरको क्वेसन अब धेरै राम्रो लाग्यो। भनेको प्रयास त हाम्रो जारी छ नि। अब यस्तो प्रयासमा नि हामीले सर अब खास गरेर फर्स्ट प्रोग्राम मिथिलाको खानालाई प्लेटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन गरियो, जुन 1 जनवरीमा गरेको थियो आइएचएम कलेजमा। जुन हामी आइएचएम कलेजको म्यानेजमेन्ट या टिमलाई नै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु कि उनीहरूले नजानेर पनि मिथिलाको खानालाई यति राम्रोसँग प्लेटिङ र प्रेजेन्टेसनमा हेल्प गर्नुभयो, हामीलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो उहाँले। अनि उहाँको कारणले नै आज हामी यहाँसम्म पुगिरहेको छौँ। भनेको उहाँले नै हामीले जुन मिथिला खानाप्रति जुन एउटा हामी भन्छौँ नि रुचि देखाउनु भयो। अनि त्यसपछि मैले सेकेन्ड प्रोग्राम काठमाडौँमा नै 3 दिनमा 1500 जनालाई उत्कला क्याफेमा मैले खुवाएँ। त्यसपछि मैले अमेरिकामा प्रोग्राम गरेँ। त्यसपछि मैले चितवनको उन्नति कल्चर भिलेजमा गरेँ, यहाँ वेलकम होटलहरूमा गरेँ। तर जे हुँदा पनि अहिलेसम्म धेरै पोजिटिभ रिजल्ट एन्ड रिस्पोन्स आयो। त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा नेपाल टुरिज्म बोर्डद्वारा पनि खानाहरू छापियो, नेपालको इतिहासमा यसरी पहिलोचोटि भयो। अनि मेरो प्रयास अहिले धेरै छ कि अब यसलाई गरौँ। अहिले लकडाउन नहुँदा सायद म अहिले 20भन्दा बढी प्रोग्रामहरू सकाइदिन्थेँ, जुन फेस्टिभलहरू, तर अहिले पर्मिसन नपाएको खण्डमा या त केही लकडाउनको कारणले यसलाई अगाडि बढाउन अहिले गाह्रो नै भइरहेछ। तर पनि अहिले भोलिको दिनमा यो अगाडि पनि हुनेवाला छ। अब जस्तो धेरै नेपाल टुरिज्म बोर्डको अफर छ, धेरै ठाउँहरूको अफर छ, चाहे टुडी के अरे भिकुटी मण्डप अनि मिथिला फेस्टिभल गर्ने टन्नै अफरहरू आइरहेछ। अब यसलाई अब पहिला त वन म्यानमा आर्मी थिए, अहिले सबैले साथ दिइरहेछ। सायद भोलिको दिनमा यिनीहरूलाई अझै अगाडि बढ्छ। र यो जबसम्म मेरो कथन हो कि या त सिटिभिटीको जुन कोर्स हो, हाम्रो होटल म्यानेजमेन्टको 12को या ब्याचलरको कोर्स हो, तिनीहरूमा पनि मेरो राख्ने लक्ष्य छ। अब यिनीहरूलाई एउटा प्रयास मेरो जारी नै छ। भोलिको दिनमा यसलाई अगाडि नै लग्छु भन्ने आशा मसँग 100% नै छ। तर यो काम अगाडि नै जान्छ, यो पनि कन्फर्म नै छु सर। एकदमै धन्यवाद। मैले त तपाईँको फेसबुक युट्युबमा धेरैचोटि हेरेको छु, थकाली खानाहरू जुन नेपालमा प्रसिद्ध छन्। तपाईँले पनि मिथिलाको खाना, मिथिला के थारी भनेर सायद तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। कति ठाउँमा त्यो मैले हेरेँ, मलाई गर्वान्वित पनि बनायो।
कि होइन जब थकाली खाना यति प्रसिद्ध हो भने मिथिला के थारी होइन थारी कि थार थाय भनेर आहा कति राम्रो शब्द मिथिलाको थाय ऊ त्यसमा सबै मिथिलाका भोजन हाम्रो परिकार हुन्छ। यति पुण्यका काम साँच्चीकै यसलाई वर्णन शब्दमा मैले गर्न सक्दिनँ। उहाँले जुन पुण्यका काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले फेरि मैले हृदयदेखि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको एउटा अनुरोध पनि आएको थियो एउटा कविता वाचनको। म एउटा कविता वाचन गर्दैछु। मैले मिथिला गानै भनेर मेरो कविताको शीर्षक हो। यो मेरो गोर्खापत्रमा छापिएको कवितै हो। धोती कुर्ता पाग डोप्टा मैथिल अछि नाम यो। धोती कुर्ता पाग डोप्टा मैथिल अछि नाम यो। जनक जननी डिहिया विद्यापतिक सुन्दर गाम यो। जनक जननी डिहिया विद्यापतिक सुन्दर गाम यो। दही चूड़ा तरुआ तीमन दही चूड़ा तरुआ तीमन मखान आ मालदा आम यो। दही चूड़ा तरुआ तीमन मखान आ मालदा आम यो। सब क्यों हाथ जोड़ करू मिथिला के प्रणाम यो। सब क्यों हाथ जोड़ करू मिथिला के प्रणाम यो। सकड़ा राजदेवी भूमिजा कंकालनिक संदेश यो। सकड़ा राजदेवी भूमिजा कंकालनिक संदेश यो। जलेश्वर मठियानी धनुषा धाम आ सहलेश यो। जलेश्वर मठियानी धनुषा धाम आ सहलेश यो। जगत जननी वैदिक उपदेश मिथिलाक शान यो। विश्व प्रसिद्ध छी हम सब मिथिलाक संतान यो। विश्व प्रसिद्ध हम सब छी मिथिलाक संतान यो। विकासक हेतु बढ़ि रहल अछि ई लाखों लाख हाथ यो। विकासक हेतु बढ़ि रहल अछि ई लाखों लाख हाथ यो। मिथिला भाषा के बचाओ आ मिथिलाक खान पान के बचाओ। इहे हम सब मिथिलाक संतान कहैत छी यो। इहे हम सब मिथिलाक संतान कहैत छी यो। इहे हम सब मिथिलाक संतान कहैत छी यो। कहैत छी यो। धन्यवाद। सर बहुत बढ़िया। और कम से कम एगो चीज हमरा आप बोले मैथिली बचे रहे वो बहुत बढ़िया लगे। और दोसर बात पहले चोटी के केकरो जे हम एहि सबके खान पान के पहले कविता सब अपने जे लिखने छलिए और कविता सब छै मगर जे अपने के जे कविता सब में स्पेशल है एगो हमरा इहो सौभाग्य मिलत कि जे कॉलेज सब में जेबे तो इहो सब गुनगुनाबे के अपने जे होली के कविता रही लिखने वो हम कॉलेज सब में गुनगुनी लेनी काठमांडू में वो तो करीब हम यादे रही कॉलेज में जना तो इस संदर्भ में तनिका हमरा खुशी लगे कम से कम एगो तो ये है ना कि एगो गुरु मिल जाए छे कम से कम जना अहाँ खान पान के ऊपर चले छे बहुते खोजे छे तेहन सब नहीं मिले छे गाँव में हमरा जाय पड़त रहे छे हर एक चीज के एहि पर सोच पड़त रहे छे तो तहु के लागे सर के हम बहुत बहुत मोरे कोटि कोटि धन्यवाद दै छी। और कार्यक्रम के लास्ट तरफ हम आ गए छी तो अब सर के अब इहो कह चाहे छी कि जे आम आदमी सब छै और जे हमारे यूट्यूब चैनल व्यूअर सब छै जे हमारे सब देख रहल छै जे अपन मिथिला वासी छै ओकरा अपने की संदेश दिए चाहबे सर? बहुत मार्मिक बात केलहुँ। सही बात छै मिथिला के युवा पीढ़ी जे युवा वर्ग छै आब ई युवा वर्ग बहुत आगा छै। सब शिक्षित छै सब पढ़ि रहल छै सब आगा बढ़बाक लेल सोचि रहल छै तो हुनका हम सबसे पहले ई कह चाहबै जे अहाँ बहुत आगा बढ़ू चांद तारा के छू लिअ अहाँ मंगल ग्रह पर पहुँच जाओ। लेकिन हमर ई विशेष अनुरोध रहल अछि जे अपन भूमि अपन माय के मातृभूमि के अपन भाषा के कहियो नहीं बिरसू कहियो नहीं बिसरब। कियाकि आदमी के मनुष्य के अपने भाषा अपन पहचान करबै छै जकर भाषा एहि पृथ्वी पर बचलैया जकर खान पान रहन सहन अपन बचलैया ओकरे अस्तित्व एहि भूमि पर रहलैया। इहो हम अहाँ जानै छियै डायनासोरो एक दिन छलैया एहि धरती पर लेकिन वो लोप भऽ गेलै। किया भेलै अहाँ बहुत बुझि सकै छी युवा वर्ग अहाँ अपने पढ़ि रहल छी ओ डायनासोर एग्जाम्पल अइ ओ नहीं है। पढ़ू पढ़ऽ के अर्थ नहीं होइ छै हम अपन भाषा बिसरि जायब हम अपन संस्कार बिसरि जायब हम अपन खान पान बिसरि जायब। ताहि लेल आइ जे महेश बाबू लागल छथि हमर सबके मास्टर शेफ छथि हमर सबके आदरणीय व्यक्ति छथि हमर सबके प्रतिष्ठित व्यक्ति छथि हमर सबके गौरवान्वित हमरा सबके कऽ रहल छथि
हुनकर यूट्यूब चैनल, हुनकर विभिन्न माध्यमसँ, फेसबुक माध्यमसँ हुनकर हरेक मिथिला कल्चरके अहाँ सब देखू, खान पान देखू आ ओ अनुसरण करू, अहाँ बढ़ू, अहाँ आगाँ जाओ, अहाँ अमेरिका जाओ, जापान जाओ, अहाँ ऑस्ट्रेलिया जाओ, अहाँ हरेक देश में जाओ, लेकिन अपन भूमि के हृदय में राखू, मन में राखू, कियाकि माय आ मातृभूमि सब पैघ कोनो चीज नहीं होइ छै। इहे चीज छै जे आदमी के अपन अस्तित्व दिलाबै छै, अपन अस्तित्व छै। तऽ पुनः हम सब युवा वर्ग में अनुरोध करब जे खान पान जे महेश बाबू लागल छै, मास्टर शेफ महेश शाह जी लागल छै, हुनका प्रमोट करियौन, सब आदमी हुनका प्रोत्साहन बढ़ाबियौन, हुनका सहयोग करियौन। हमसब आ हम सरकार से 2 नंबर प्रदेश सरकार से सेहो विशेष अनुरोध करै छियै जे हुनका टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से हुनकर खान पान के, हुनकर जे लक्ष्य छनि ओ लक्ष्य के अहाँ सहयोग करियौन, जे हमरा सबके काल्हि हमर अस्तित्व और सुरक्षित रहत आ गौरवान्वित हैत विश्व स्तर पर। अतेक हम कह चाहै छी एहि माध्यम से। धन्यवाद सबमे आ नमस्ते सबमे हम करऽ चाहै छी, प्रणाम करऽ चाहै छी।